Gene augmentation therapy. It was not directly the gene therapy that was started, rather, the first process was gene making or gene marking. So, in case of gene marking, the exogenous DNA was transferred into the patient, and then the cells from the patients they were removed, and then the foreign or exogenous DNA was detected. So this was the basic principle of gene marking, and mainly this process was used to cure different type of recessive diseases. जैसे मैंने बताया था कि recessive diseases ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि एक नॉर्मल जीन है उसमें म्यूटेशन हो और उसकी फंक्शनिंग जो है वो डिसरप्ट हो जाए। तो इस तरह की जो डिजीज़ हैं जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम acquire होती हैं, they may be called as recessive diseases. So such diseases they can be cured by using gene augmentation therapy. For example, here the cancerous cells they can be targeted by using modified lymphocyte cells that are the cells of that are present in the blood, and they can be used to treat cancerous cells growth. So lymphocytes they have the ability to target the cancer cells and can cause their death, and it is due to the secretion of certain proteins that may be called as the tumor necrosis factor, TNF, ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर। ये लिम्फोसाइट सक्रीट करते हैं जिसकी वजह से कैंसरस सेल्स जो है इनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह के फैक्टर जो हैं हम लिम्फोसाइट्स में जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और कुछ सेलेक्टेबल मार्कर जो कि एंटीबायोटिक के फॉर्म में होते हैं लाइक न्यूमाइसिन, इनको यूज़ किया जाता है ताकि इस तरह के लिम्फोसाइट्स लेबॉरेटरी में हम सिंथेसाइज करें और फिर उनको टारगेटेड यूज़ करें to cure cancerous cells. So it is one of the example of gene marking, but the first trial was related to the cure of disease that was related to the you can say that the inhibition of enzyme which is called as adenosine deaminase, ADA. So this adenosine deaminase enzyme, it is very important because its deficiency it can you can say that cause immunodeficiency in the patient, कि जो immune system है वो compromise होता है और उसकी वजह से different type of diseases जो हैं वो हो सकती हैं। तो immunodeficiency जो है वो adenosine adenine deaminase की वजह से होती है, ADA। इसके अलावा जो ADA एंजाइम है उसका एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि लाइक अदर एंजाइम्स इट इज़ आल्सो प्लेइंग रोल इन सैल्वेज पाथवे। सैल्वेज पाथवे एक ऐसा पाथवे है जिसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो डी नोवो सिंथेसिस की बजाय उनको रिसाइकल किया जाता है। तो इसमें जो एडिनोसिन डीअमाइनेज या ADA जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस तरह से ये जो पेशेंट्स हैं वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड भी हो जाते हैं और उनमें कुछ इम्पोर्टेंट पाथवे जो हैं वो भी ऑपरेट नहीं होते। तो इस तरह से ये एक डेडली डिजीज़ है। तो इस सिलसिले में चूँकि पेशेंट ऑलरेडी जो है वो एट स्टेक था तो इसमें ये एक्सपेरिमेंट किए गए। तो इस सिलसिले में जो पेशेंट जो जिसको ट्रायल्स में यूज़ किया गया वो एक फ़ीमेल थी 4 साल की जिसको ये ADA डेफिशिएंसी थी। तो चूँकि उसकी लाइफ ऑलरेडी ख़तरे में थी तो उसको यूज़ किया गया कि क्या इसकी डिज़ीज़ को क्योर किया जा सकता है कि नहीं। तो उस पर्पज़ के लिए उसके बोन मैरो सेल्स लिए गए, उसको ट्रांसफॉर्म करवाया गया ADA इनकोडिंग जीन्स से, और फिर उनको दोबारा जो है वो शिफ्ट किया गया जो पेशेंट है उसकी बॉडी में। तो ये देखा गया कि इनिशियली बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया और जो ADA की सिंथेसिस जो थी वो मैनेज हो गई। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम it was observed that
the expression of adenosine deaminase or ADA, it was transient or temporarily. तो अगेन उसको फिर बार बार जो लिम्फोसाइट्स की डोजेस थी जो जिनमें ये एबिलिटी थी कि इस तरह के एंजाइम को वो सिंथेसाइज करें, उनके साथ उसको ट्रीट किया गया. तो इसके अलावा कुछ और भी रिसेसिव जो डिजीज़ हैं इसको ट्रीट किया जा सकता है, जिसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो एक एग्जांपल है. लेकिन उससे पहले हम एक आउटलाइन डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ADA जीन को यूज़ किया जा सकता है टू क्योर इम्यूनो डेफिशिएंसी. तो ये एक प्रोसीजर है फॉर एक्स वीवो जीन थेरेपी कि हम बोन मैरो सेल्स जो कि किसी खास प्रोडक्ट में या प्रोटीन में डेफिशिएंट होते हैं, बोन मैरो सेल्स हम पेशेंट से रिमूव करते हैं and then they are cultured ex vivo, that is away from the patient body, and then they are transfected with gene like ADA gene that have the ability to synthesize adenosine deaminase, and then they are selected on antibiotic medium, that is neomycin, whether the foreign gene it has been inserted in the cells or not. And once it is confirmed, then the cells that are now modified, they are again returned to the patient. So in this way, if the therapy it is successful, then ADA production it can be again started in the patient. So this is one of the outline that can be used in gene therapy to cure ADA disease that can cause immunodeficiency.